चलो भैया, लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट। एंड क्या बात करी जाए इसमें? यूनिवर्स तो है ही है भैया दुनिया में। दुनिया में क्या, यूनिवर्स के अंदर दुनिया बाय द वे। सो यूनिवर्स इज देयर, बिग बैंग वाज देयर, बिग बैंग तो हुआ ही था, है ना। उस प्रोसेस में बहुत सारा मैटर और एनर्जी भी बनी थी, चाहे स्पेस भी है जिसको हम लोग फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैटर बहुत सारे एलिमेंट से बनता है ना, ये हमने जान लिया। एलिमेंट्स जो हैं फिर वो कंपाउंड्स बनाते हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं, और मिक्सचर भी होता है। रोमा पोद्दार जी, यस मैडम, बताइए। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, तुमको भी हेलो। और उसके बाद अभी 2023 तो है ही है, उस बीच में सन, मून, अर्थ ये सब आए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग भी आए हैं, हम लोगों ने खेती की, हम लोगों ने युद्ध लड़े हैं, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की है, सर्विसेज डेवलप की है, इंटरनेट डेवलप किया है, स्मार्टफोन डेवलप किया है। अभी 5G लॉन्च हो रहा है बहुत जगहों पे, बहुत देशों में, वगैरह वगैरह की बातें हैं। सो ये हमारी हिस्ट्री है। मैंने अपना व्हाट्सएप और इंस्टा ऑन कर दिया, हमको पता था पुत्री। कीप इट अप। सर अर्जुन, फीलिंग्स मेरे लिए, हमारे रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है यार? पेड है रोमा जी लेकिन, है ना। टैरो इज पेड। 200 INR, 200 रुपये चार्ज है ना। इफ इट इज ओके देन गुड, अदरवाइज सॉरी मैडम। और गाली भी खाया, गुड, अच्छा किया। तो यूनिवर्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो यूनिवर्स है ही है, पहले बताया ना, बिग बैंग हुआ, सन बना, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी बनी है आपकी, अर्थ भी है, ठीक है मैडम, थैंक यू एज वेल। मून है, अर्थ में भी फिर लिथोस्फीयर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। तुमको एक भी पेज नहीं मिला मैप वाला? इकोनॉमिस्ट की न्यूज़ देखा करो, लेकिन वो पेड रहेगी। कोई बात नहीं, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। एक एटलस खरीद लो चाहो तो, बहुत महंगी नहीं आती, शायद 100 से 200 रुपए के बीच में आ जाएगी एट मैक्स। ठीक है, नहीं तो गूगल मैप्स तो होता ही है। कंट्रीज का नाम जरूर मिलता होगा, है ना। कंट्री का नाम मिलेगा, स्टेट्स का नाम मिलेगा, प्लेसेस का नाम मिलेगा। उनको गूगल मैप्स में विजिट कर लिया करो, है ना। नहीं तो ऐसे ही गूगल मैप्स थोड़ा सा विजिट कर लिया करो, कहीं भी ऐसे घुमा फिरे, कहीं भी जूम इन करके देख लो। फ्रा पेरिस को देख लो, पेरिस में क्या क्या है, वॉशिंगटन डीसी में देख लो, है ना, शिकागो में देख लो, सिएटल में देख लो, और कौन सी जगह, लेबनान है, वहां देख लो क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत सारे देश हैं। गूगल मैप्स में भी काफी कुछ है, गूगल मैप्स ही देख लिया करो ऐसे घुमा फिरा के। तुम समझ गए मैं बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। लुक आउट। चलिए, थर्ड, फिर वही शुरू कर देता हूँ मैं। यूनिवर्स तो है ही है, बिग बैंग हुआ ही है इसमें, और बीच में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बनी है, ठीक। फिर सन, अर्थ, मून, अर्थ में लिथोस्फेयर है, इसमें कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो हैं वो बने हैं हमारे। लिथोस्फेयर के पीछे जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसेंशियली, इसकी वजह से दोनों बने, एलिवेशन माउंटेन्स भी और ट्रेंच भी, एक तरह उसको मैं क्या कहूँ, समझ जाओ। ओशन का जो डीप पार्ट है वो, और जो ऐसे ऊपर उठता है वो, दोनों ही बने। भैया हम कल बात कर रहे थे तो आपने बोला कि हम ऊपर ऊपर से डिस्कशन कर रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं किसी भी टॉपिक पर।
और फिर जब न्यूज़पेपर का बात आया तो आपने बोला ज़्यादा डीप में एक स्टेट के बारे में मत पढ़ना। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, रेंज भी और प्लस डेप्थ। रेंज मतलब कि तुम कितने स्टेट्स के बारे में पढ़ रही हो, तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। बट इनके अंदर फिर डीप में भी थोड़ा जाना जरूरी है ना? तो ये कैसे मेंटेन करा जाएगा? ये ऐसे ही मेंटेन करा जाएगा ना, कि आप किसी एक स्टेट के बारे में पढ़िए थोड़ी देर, फिर वहाँ टिके मत रहिए, कहीं और जाइए। किसी दूसरे स्टेट के बारे में पढ़िए, फिर वहाँ टिकिए नहीं, फिर कहीं और जाइए। है ना? इस तरीके से मूव करते रहिए, तो फिर जब अगली बार फिर यहाँ पे भी तो आएंगे ना, दोबारा जब आएंगे तो फिर यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दिस, दिस एंड दिस एंड दिस। तो फिर इनका नॉलेज जो तुम्हें और चार स्टेट का होगा, उनकी उनके नॉलेज को कनेक्ट करके तुम इस स्टेट के बारे में जान पाओगी। तो जो तुमने पहली बार पढ़ा होगा उसके बारे में, उसको तुम अपने बाकी स्टेट की नॉलेज से कनेक्ट कर पाओगे। सो ये है, सो रेंज और डेप्थ का बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये नहीं होगा तो पीसफुल नहीं रहेगी, है ना, डिसाइसिव नहीं रहेगी तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे, यू विल स्टे कंफ्यूज्ड। आप कल कुछ द हिंदू पढ़ने का बोल रहे थे ना, वो क्या है? द हिंदू पेपर एक आता है ना? तमिलनाडु से छपता है, चेन्नई से स्पेशली। तो ठीक पेपर है, डिसेंटली अनबायस्ड पेपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई बायस्ड ही नहीं है। देखो पेपर जो होते हैं, है ना, उनका एक लीनियन एक तरफ होते हैं। कुछ कुछ पेपर जो होते हैं वो प्रो मार्केट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स होता है, वो प्रो मार्केट पेपर है। कुछ होते हैं जो प्रो पुअर होते हैं, ठीक है, उसमें तुम द हिंदू को रख सकते हो। तो ठीक है, लेकिन फिर भी डिसेंटली डिसेंट पेपर है ना? ओवरऑल उसकी सेंट्रल पेपर पढ़ना चाहिए काफी, ऐसा पेपर जो थोड़ा सा सेंट्रल हो, इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा किसी तरफ झुका ना हो। ठीक है, तो द हिंदू जो है वो थोड़ा सा सीपीआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में है ना? बट ठीक है, ओवरऑल पेपर ठीक है। कोई भी पेपर पढ़ लो पहले तो इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा सा नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए बस, लेकिन कम से कम। यस, ठीक है, एंड द सेम अप्लाइज फॉर द नेशन एज वेल, कि इंडिया के बारे में भी जानना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सटे रह गए। चाइना के बारे में भी जानो, यूएस के बारे में भी जानो, फ्रांस के बारे में भी जानो, रशिया के बारे में भी जानो। फिर ये सब क्या हो गया, सब रेंज बढ़ा रहे हैं तुम्हारी, लेकिन वापस भी तो आना है ना। जानो, मूव करो, फिर जाओ, फिर मूव करो, फिर जानो, फिर मूव करो। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये देखना होना है, देखते रहना होता है कि क्या कम हो रही है, रेंज कम हो रही है, फिर डेप्थ कम हो रही है। अगर डेप्थ कम हो रही है तो डेप्थ बढ़ाओ, रेंज कम हो रही है तो रेंज बढ़ाओ, है ना? और एक सर्टेन कंटिन्यूम रखोगे अगर पढ़ने का, तो अपने आप ही ये दोनों मेंटेन रहेंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ोगे तो अपने आप ही रेंज और डेप्थ दोनों बैलेंस होते रहेंगे। ठीक, चलो। चलो भैया, तो यूनिवर्स है, फिर मैं वही बात करता हूँ, बिग बैंग हुआ है, उसके बाद फिर मिल्की वे गैलेक्सी है तुम्हारी, उसके बाद फिर तीन है, सन, मून एंड अर्थ। अर्थ में लिथोस्फेयर है, ठीक है, अर्थ पे वाटर साइकिल भी है, और लिथोस्फेयर में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह रहा है, फिर उसमें कंटिनेंट्स बहुत सारे बने हैं, वो अभी भी मूव कर ही रहे हैं। अंदर जो है अर्थ के लावा वगैरह है काफी। अर्थ पे जो कुछ भी है, जो कुछ भी जो मैटर दिखता है ना, वो घुमा फिरा के यूनिवर्स का जो बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ है वहीं से आया है, वहीं से मिल्की वे में आया है। मिल्की वे के अंदर फिर सन है, सन के अंदर फिर सन से अलग होकर अर्थ बनी है ना? तो वो है, क्या क्या पर है यहाँ पर, हल्के मेटल हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना? सारे जो पीरियोडिक टेबल है वो आ जाएगी यहाँ पर आपकी, उनके अलग अलग अमाउंट है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं फिर उन्हीं से लाइफ बनी है। तो अब अर्थ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा यूनिवर्स में नहीं घूमते हैं, हालांकि अर्थ और यूनिवर्स के बीच में हमें घूमते रहना चाहिए और घूमते रहेंगे भी। ठीक है, बीच में स्पेस तो है ही इंटरमीडिएटरी, जहाँ पर फिर हमने हबल टेलीस्कोप पहले था, है ना, और अब तो जेम्स वेब है। इसके आगे कुछ और पावरफुल आएगा। ठीक है, देखो अर्थ पे बहुत सारी लाइट आती है सन से।
अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है ये, तो लाइट आती है। ठीक है, तो लाइट को हमने स्टडी किया है धीरे धीरे, स्लोली वी स्टडी द लाइट मोर। ठीक है, डे एंड नाइट होते हैं अर्थ पे। अर्थ में तो ये तो रोटेशन की वजह से होते हैं इसके। पहले तो हमने यही समझा धीरे से, जीवन में मान लो एक सेंस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, सीजन्स बदलते हैं, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग। ठीक है, ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, रिवोल्यूशन जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। सन है, सन उसको खींचता है, वीनस भी खींचता है, जुपिटर भी खींचता है, सबका एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन चल रहा, तो उस प्रोसेस में उनके इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, इसीलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। अब यहाँ पे इतनी बात करोगे तो इतने से ही डे और नाइट और सीजन से ही, रोटेशन और रिवॉल्यूशन से ही निकल के आ जाएगी ये बात कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल क्यों है ना। या फिर ऑर्बिट यानी कि प्लैनेट्स जो है वो मूव कैसे करते हैं, मोशन कैसे हो रहा है। उसमें दो बातें निकल के आती हैं कि जब हम लोग देखोगे अगर ऊपर स्काई में, तो फिर तारे चलते हुए दिख सकते हैं, सूरज अस्त होता दिख सकता है, सूरज उगता हुआ दिख सकता है, चांद के बहुत कुछ, चांद में बहुत कुछ होता रहता है ना, उसकी कलाएं वगैरह वो सब। तो यू कैन फील कि अर्थ जो है वो खड़ी है और ये सब मूव कर रहे हैं, है ना। और अल्टीमेटली भी रियलाइज किया ऐसा है कि अर्थ भी मूव कर रही है, सन एक्चुअली में सेंटर में है ना। वैसे मूव तो सन भी कर रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी मूव कर रही है ना, यूनिवर्स में सब कुछ मूव ही कर रहा है। चलो, ठीक है। तो वही जाके फिर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी वगैरह बनती है बाद में जाके। ठीक है जी, चलो। तो फिर अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ में हमने देख लिया रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, और अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी भी हुई है। जो एक्सिस पे इसका झुकाव है वो भी इसके ग्रेविटेशन पुल जो है आसपास के, वीनस का, सन का, है ना, जुपिटर का, एक्सेट्रा, वही है जो उसे हल्का फुल्का उसने उसे कभी झुकाया है कभी इधर किया, और अभी तो ऐसी स्थिति चल रही है कि 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, और घूम भी रही है और रिवॉल्व भी करती है। यही तीन चीजें होती हैं शुरुआत में जानने लायक अर्थ के बारे में। एंड देन वी गेट टू नो अर्थ कि हाँ भैया, अंदर जो है वो क्रस्ट के अंदर बहुत सारा कोर है, कोर बहुत हॉट है ना। हॉट तो फिर सन का भी कोर है, और केवल यही दो नई चीजें हैं, है ना। कहने का मतलब है कि डिसेंट अमाउंट में हैवी टेम्परेचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हमसे बहुत दूर नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता है। हम लोग 36 डिग्री सेल्सियस पे आसपास काम करते हैं अपने जीवन में, लेकिन अर्थ पे ही पहली बात तो बहुत वो मौजूद है ज़्यादा। ठीक है, पीछे जाओगे यूरेनस नेपच्यून वगैरह पे बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर सन बहुत दूरी पड़ती है। अर्थ जो है बीच में पड़ता है, वीनस एंड मरकरी, और इधर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह ये सब। इसके लिए हमने फिर वॉयेजर भेजा ही था। ठीक है, सो वन थिंग इज टेम्परेचर, है ना। सन से बहुत पास जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दूर जाओगे तो कम होता जाएगा। बीच में धरती है। ठीक है, धरती के भी जब अंदर जाओगे तो बहुत टेम्परेचर है, ऊपर जाओगे तो कम है सरफेस पे। ठीक है, वहां पे पानी भी काफी पड़ता है, तो पानी का भी असर पड़ता है क्लाइमेट पे। ऊपर जाओगे तो और कम होता जाएगा, फिर देन अगेन यू कैन गो इन द स्पेस एंड देन मूव हियर और देयर। ठीक है, चलो भैया, लेट्स मूव। क्या बात समझ में आई? यूनिवर्स में टेम्परेचर बहुत वेरी करता है अल्टीमेटली। यूनिवर्स में सोलर सिस्टम तो है ही है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, लेकिन बिलियन गैलेक्सीज हैं, बिलियन से भी ज्यादा होगा, 100 बिलियन और भी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये बिग बैंग हुआ था, वहीं से एक्सप्लोजन चल रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स बने हैं। ठीक है, स्टार्स का क्या है, स्टार्स बनते हैं, रहते हैं, और फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, खत्म होते हैं तो फिर ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, फिर इसी को लेके फिर और फिर स्टार बनते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहता है प्रोसेस, बनना, रहना, बिगड़ना। इस तरीके से जो यूनिवर्स में है वो मैटर और एनर्जी इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो अगर बहुत बड़े स्टार बन जाए, है ना, ये आसपास का जो डस्ट वगैरह है वही सब लेके कलेक्ट करके लोग बनते हैं धीरे धीरे स्टार। ठीक, अगर स्टार का मास तो होगा ही ना,
एक मास भी तो बात है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर उसका जब एक्सप्लोजन होगा तो एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें फिर लाइट तो रिलीज होती ही होती है। बहुत सारी चीजें होती है ना, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी वगैरह सब सब रिलीज होगा। ठीक है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं आप लोग जनरल भाषा में। रेडिएशन फिर इट स्टार्ट्स wave motion, doing wave motion, it travels, then it travels quite far, and then it might reach earth and solar system as well, अगर बहुत कहीं दूर यूनिवर्स में कुछ हुआ भी है तो। ठीक है, so that is happening, universe is not static ना, it's dynamic, it's happening every time, every second, every minute. We are not controlling it, it's just the way it is। ठीक है, और जब बहुत मास होता है तो फिर स्टार जो है कोलैप्स होकर ब्लैक होल वगैरह बन जाता है ना, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स। तो ये सब जो है वो बाहर यूनिवर्स स्पेस में, एस्ट्रोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल स्पेस में एक सेंस में हो तो रहा ही है, एक सेंस में क्या हो ही रहा है ना। ठीक है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उस तरीके का है। अब बात यहीं से आ जाती है कि इस तरीके से तो हमारी ही शुरुआत हुई हुई थी ना, हमारी शुरुआत हम लोग यहीं से है ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना ये सब, कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो कहीं ना कहीं हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारी शुरुआत ऐसे हुई थी। ठीक, तो हम तो लाइफ है ना, हम टेम्परेचर तो है नहीं, टेम्परेचर भी है हमारा एक सेंस में, बट वी आर मूविंग है ना, वी हैव अ लाइफ, वी हैव एनिमल्स, वी हैव प्लांट्स। तो फिर बात वही आ जाती है कि वी स्टार्ट थिंकिंग कि अगर यहाँ सब यहाँ पर ऐसे हो सकता है और खत्म भी हो सकता है बाद में चल के, क्योंकि सूरज जो सन जो है हमारा वो बाद में है ना सब कुछ ले 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 लेगा एक सेंस में, मरकरी, वीनस, अर्थ वगैरह मोस्ट लाइकली सब ले लेगा। ठीक है, जब फटेगा तब सन की एक जो सर्टेन वो है टाइम जोन है, 4 बिलियन के आसपास, 4 बिलियन ईयर्स के आसपास है, वो फट जाएगा, उसके बाद वो सब ले जाएगा, खत्म। ठीक है, तो या तो धरती छोड़ के चले जाओ, है ना, या तो फिर जब वो होगा टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, है ना, सन का साइज जो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसलिए इस प्रोसेस में हमें ये जानना जरूरी है कि स्टार्स कैसे बनते और खत्म होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही एक स्टार बैठा है, सन। अब समझ में आ रहा है कि क्यों, वाई इज इट सो क्रूशियल टू स्टडी द स्टार्स। और बिग बैंग में और कुछ हुआ नहीं है, देर आर स्टार्स एंड देन देर आर प्लैनेट्स, एक सेंस की बात बता रहा हूँ, देन देर इज ब्लैक होल, और फिर वो भी स्टार्स का ही पार्ट है, नोवा, सुपरनोवा, पल्सार, वो सब इसी का पार्ट है, स्टार से ही बनते हैं, व्हाइट डॉर्फ वगैरह सब, ब्लैक होल, एवरीथिंग। ठीक है, और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बात हो जाती है बाद में। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, हमारा जो फ्यूचर है, हम जो भी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन को जिताइए, डेमोक्रेटिक को जिताइए, बीजेपी को जिताइए, कांग्रेस को जिताइए, शादी करिए ना करिए, घर बनाइए, घर खरीदिए ना खरीदिए, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, आप क्लाइमेट चेंज के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी लेके आइए, अल्टीमेटली दिस द सन इज गोना कोलैप्स। ठीक है ना, इट विल इंक्रीज इन साइज मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, एंड अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स एंड बिकम ए व्हाइट डॉर्फ और समथिंग अलोंग दोज लाइंस। जिस तरीके से स्टार खत्म होते हैं, सन का मास बहुत है ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, तो ये तो एक है ना, तो मिल्की वे और सोलर, मिल्की वे के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर एक ये चीज हो रही है, अगल बगल बहुत सारे स्टार और भी तो हैं, और उनके भी प्लैनेट्स वगैरह भी तो वो सब भी तो हैं। अल्टीमेटली प्लैनेट्स तो क्या ही करेंगे घुमा फिरा के, वो तो मूव ही कर सकते हैं, जरा सी एनर्जी होती है। मेन ये होता है स्टार, स्टार आपके पास आसपास कौन सा, वो हमें दिखते हैं ये रात में, है ना, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ कम ब्राइट होते हैं, कुछ मूव कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, कुछ बहुत धीमे मूव कर रहे होते हैं, जो बहुत धीमे मूव कर रहे हैं उसका मतलब दे में भी, है ना, वेरी फार, कुछ में बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखाई भी देते हैं, है ना, सप्तर सितारा मंडल वगैरह। कहने का मतलब ये है सर कि those stars are not different from the star that you look while in the day, है ना, थैंक्स टू योर रोटेशन, अदरवाइज तो फिर वो कहाँ ही आपको दिखते, दिखते जरूर है ना, कहीं दूसरी तरफ जाके दिखते अगर रोटेशन नहीं होता तो, क्योंकि एक साइड में तो फिर सन तो एक ही साइड में रहता है ना, तो वी वर सम हाउ बाउंड टू सी देम एज वेल, सर्टेनली। तो उसको छोड़ दीजिए, रोटेशन हो रहा है तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी कठिनाई से दिखते हैं, परमानेंट बना भी रहता टेम्परेचर, सो दैट माइट बी वेरी अनदर स्टोरी। अब ये तो हो जाएगा ये इशू कि धरती जो है घूमना कैसे बंद करेगी, तो वो आप तो ढूंढ लीजिए, बॉल घूम रही होती है वो कैसे होती है, जब चक्कर खाती है, टक्कर खाती है पिच से, है ना, फिर अल्टीमेटली तो वो रुक ही जाती है। ठीक है, तो वहां पे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम जो है उसका बना हुआ है,
तो किसी चीज से अगर ड्रैग फोर्स उस पर लगेगा तो धीरे धीरे इट विल स्लो डाउन, अल्टीमेटली इट माइट स्टैंड स्टिल एज वेल। ठीक, वो तो इनिशियली जब वो गई होगी तो मूव कर रही होगी, तो वही उसकी जो है एनर्जी चल रही है अभी भी, है ना। और ग्रेविटेशन ने उसने पुल कर लिया है। सो इट्स लाइक वेरी सिंपली, है ना, एक्सप्लोजन प्लस ग्रेविटेशन, दैट इज दैट हैज क्रिएटेड द करंट स्टेट ऑफ द अर्थ, है ना, इन टर्म्स ऑफ मोशन एट लीस्ट। ठीक है, एज फार एज एलिमेंट्स एक्सेट्रा इज कंसर्न, अगेन वेरी, क्योंकि सन से ही अलग होकर हुई थी, अगर सन कहीं और से अलग हुआ होगा तो वो अलग की बात है। तो उस प्रोसेस में जितना भी न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह हो के एलिमेंट्स बड़े हैवी हैवी क्रिएट हुए होंगे, वो सब अर्थ पे आए हैं, है ना, अर्थ से मून पे गए होंगे। फिर लिथोस्फीयर की बात करोगे तो फ्रॉम कंटिनेंट टू कंटिनेंट चेंज हुए होंगे, वही अभी माइन होके फिर सब कुछ हम लोग जो कर रहे हैं करते हैं। बट पॉइंट एक ही आता है, कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है, कि हम तो लाइवली है ना। ठीक है, so, अगर यहाँ पे हुई है, उसको स्टडी करके किस तरीके से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई थी, उस प्रोसेस में आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से पहले सन बना था, मून बना था, अर्थ बना था, लिथोस्फीयर, ओशियन, वाटर साइकिल, क्लाउड्स, एवरीथिंग, है ना, ग्रेविटेशन, मूव कैसे हो रहा है। जब वो सब हम समझ लेते हैं तो देन वी कैन आल्सो स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि कैसे लाइफ शुरू हुई थी, है ना। और इफ वी फाइंड द वेरी सिमिलर थिंग्स हैपनिंग समवेयर एल्स, देन इट इज अ वेरी क्लियर पॉसिबिलिटी दैट लाइफ माइट आल्सो स्टार्ट समवेयर एल्स एज वेल। ठीक है, so in that sense then the chemistry and the biology also starts merging in the very question of the physics as well। ठीक है, और ये सब जो है सब बड़े स्तर पे जो हमें चीजें दिखती हैं, जनरली हम बहुत अंदर या बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, हम एटम्स के अंदर नहीं जा रहे हैं और हम बहुत सोलर सिस्टम के बाहर भी नहीं जा रहे हैं, एक सेंस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बट दिस ऑल दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट 250 और 50 years और सो, 400 साल मान लो एट मैक्स। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बनाया हमने, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया, आईटी बनाए हैं, आईएम्स बनाए हैं, बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, नासा इसरो बनाया हमने, बाहर मिसाइल्स छोड़ी हैं, सैटेलाइट्स छोड़े हैं, वोएजर गया है, वोएजर 1, वोएजर 2, है ना, मार्स मिशन है, चंद्रयान है, अपोलो है, हमने टेलीस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया, इलेक्ट्रॉनिक स्कोप, क्या तो उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। सो एक्सरे मशीन्स बनाई हैं। सो इट्स लाइक, you see, है ना, but behind all of this what is happening is that we always try to go beyond what we knew, है ना, we always push the boundary of our knowledge। उस प्रोसेस में हमने R&D भी बनाया है, उसके लिए ग्रांट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी यूजीसी भी ग्रांट देती है, then there are researchers, ultimately those researchers are funded, sometimes funded by private entities as well, they use those researchers results into making products, going into markets, regulation, ultimately society, and that's how it's all running, है ना, and that's how it will keep running at least for a certain period of time as well। The institutions are important, whether it be UN, WTO, IMF, banks, schools, universities. Uh, if really kept in the right way, then families as well, marriages as well, even children, parenting, and I don't know what not, hotels and Zomato, Swiggy, everything. But for all the things to be in their proper place, there has to be a proper decent understanding. In that sense, education becomes very important. So you can say in one sense that how much time you have spent in terms of educating yourself becomes important. Doesn't really matter whether it be through an official channel or unofficial channel. Largely, I can say that. Okay, because ultimately without investing that much time here in one way or the other, whether it be officially or unofficially, you will have nothing to talk about or think about and do about and things like that. So it's like this. So where we are headed, we are certainly headed towards more boundaries of more people will be knowing very clearly that what the space is and how the biology and chemistry, and there will be quality education, which again is sustainable development goals. So we have already identified it. So we will increase access to education. 5G and 4G both will help. Our illustrations will become better, video will become better, audio quality will become better, probably interactions will become better as well. Our schools, education, schools, universities, examination systems will become better, research will become more coordinated, products will become more coordinated. So all these things are going to happen in the 21st century and 22nd and whatever we may see in the beyond. Correct? Okay, so in that sense, then once you are done with the history of the earth largely,
as soon as you are done with the history of the earth, the earth cools down and the atmosphere or the lithosphere, oceans and all, and it takes a decent amount of shape, and it revolves and rotates and things like that. Solar system, when the solar system becomes a less turbulent place, which obviously involves certain period of time for the initial explosions to settle down, है ना? You move in a space obviously naturally, otherwise you will be colliding here and there, है ना? Unless until you are directed in a space which is decently empty for you to stabilize yourself. And once the sun found it, so that once the sun found that place or that space, ultimately the whole solar system has decently stabilized itself. Still, it has started from the Big Bang, and it will always be a part of it. Okay, so no one denying that, nothing can deny that. And then from there onwards, once the Earth has stabilized itself in terms of atmosphere and all, and everything cooling and all, then from there life slowly starts taking shape. So from there the history of life happens, evolution, everything and all. And then from there ultimately from the land, from the sea to the, we arrive at the land, and from the land then we have got, we develop slowly, evolve slowly, hands and our feet. Earth, I was something which was already developed in the um, water itself. So while we were in the water itself, fishes and all, and then we perfect our eyes, and then starts, है bipedal movement. We start using our hands, build tools, build everything, factories, play cricket, badminton, tennis, everything. I don't know what, hug people, kill people, shoot a gun, everything. Type a letter with the keyboard, use this pen, and slap someone, punch someone, I don't know what, throw something. So that's the case. And then we have got then there is human history, prehistory, and then the documented history, ancient, medieval, and modern. And then we have got 20th century, and finally then here we are in the 21st century, dealing with a lot of things. But we have crossed as a species a lot of challenges. Ultimately, what appears central is that our aim is to understand. That is something which is undeniable. Understand, know the, gain the knowledge, and impart it. That's our main real aim. Getting it. Chalo, let's move. So in that sense, this much big history is crucial. The sooner you get it, the better it is. चलो भैया, एक ही हो गया. Now, what do I say? Uh-huh. Yep. Okay. Okay. So where do we start? We can see that there is a clearly at least 3 to 4 zones certainly that we can see. One, we can see that how the Big Bang to the Milky Way galaxy, galactical level, if I may use that word, then how we are, where we are in the Milky Way galaxy to the solar system or the sun, and then we can see the relationship between Earth and the sun. How we arrived from the sun to the earth and how earth is cooled, and then we can see that how earth has given start to life, especially life below water, which is again a goal. And climate obviously took shape there as well. So then, and then from there we have got life from life below water to life on land, correct? And from there then we have the history, ancient to medieval to modern. So these are, I guess, some of the stages that we can see. Mhm. These are all part of a big history. All of them are equally crucial, if I may use that term, big history. Correct. This portion is largely cosmological. This portion largely, uh, even this is the start of life.
And then this is the start of, although decent diversity was already there, this is the start of biodiversity, if I may use that word, conquering the lands. And then this is the human history. Biodiversity means this, they have developed the humans, and then humans started their journey. So, in that sense, five chapters of history don't include at all. You are not included in that history. You or your all your ancestors in one sense. And then in the human history, we have got centuries, many centuries. We have got especially the World War One and World War Two. That has certainly changed a lot of things. The arrival of the US in the behind, and now 21st century, where it's largely a century of multilateral order. It seems a century of cooperation, if I may use that word. We have already Ministry of Cooperation in India, and that for that matter. Correct. What I feel personally is that human history is good. What is really needed is probably that what's going to be more exploited, what is less understood now, or what will be this century is the biotech, for that matter, then, certainly. And biotech will involve understanding climate and biodiversity a lot more better. And also our human biology as well, although it has been studied, human biology and psychology, for the sake of the marketplace, for the businessman. I guess personally my views are there, and I think that most likely it's going to be benefited now more towards the consumer. It should tilt toward consumers, but for that we need to understand this better, how the biodiversity really came into being in the first place, when life started coming out of water to the land, and how the whole evolution has happened on the land. Hmm? And that when the humans were very uh, they were killed by in forest, and then they came out of the forest, built villages, cities, metro cities, capitals, global cities, as I say, from forest to global financial centers. Correct? I like it. Okay, let's move. Whew. What we see here then is that international relations plus biology, both of them are equally important. International relations already done now have decently environment in its ambient environment, in the sense of climate change and biodiversity, and that then leads to biology ultimately. So international relations is certainly also about now biology as well. No doubt it also is about humans. So we have arrived at that scale that we are affecting the whole earth has a place, certainly not solar system, not at all, not at all. Solar system has no problem at all with humans. Whatever we wanna do, we can do on the earth. Nothing is gonna happen. Nothing is happening with the moon. Nothing is happening with the Mars or Jupiter or Saturn or Uranus or Neptune or even Sun. Nobody has any problem at all. In one sense, Earth also has no problem at all. You can do you all you Earth has already done this thing before. Ice Age it has already seen, and it has no issue at all with the ending of the life as well. Earth will have no problem in that. Already the it knows somehow. I mean, it's not sentient. Already it knows the sun is gonna collapse me sooner or later. So life is gonna collapse as well, automatically. So it's not a matter of concern, at least for the Earth. It's only about humans and the other life forms. Other life forms they can certainly not do anything at all. So it's about humans. If humans will destroy the environment, it will create problem for the humans itself. Simple as that. Correct? Correct. Let's move there. That's why they will have to understand the sustainability. And in that process, they have already identified the sustainable development goals as well. Sustainable development goals obviously first has to be achieved if anything has to be done, and then ultimately this will become
quality development goals, I guess, personally. It will certainly lead to this. Behind this was development, and now we have taken a little bit of bad course, as I was saying, that technology and everything else was largely used for the favor of the businessman. Now it has to change for the betterment of the consumer or the betterment of the mass scale. Okay, so quality life, if I can use that word, or QDG is also good, I guess. So they will certainly move towards this. They will have to move towards this, but in the first place, they will have to at least achieve first of all sustainability. But whatever experience they will learn while achieving sustainable development goals will automatically propel them towards quality development goals. So it's an intermediate, if you can see it on a larger scale. It's like being totally blind. It's like having one eye at least, and then it will be like having both the eyes open, knowing outer as well as inner both the ways better. Here it was knowing that there is something out there as well. Here it is being lost in the outer, and here it is making the inner and the outer both well connected. And this is an idea whose time has come. Let's move. हम्म, ठीक है जी. क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई सर कि your problems, you as an individual are facing a lot of problems. The root of the solutions of your problems involve in SDGs. For you to really appreciate SDGs, you need to know the big history. And in that, two histories are very crucially important, especially the human history and the history of life. Essentially, these two make the history of the earth, which is 4 billion years ago. Almost 4 billion years is the age. Universe age is 13.4, something along those lines, or 14.3 ऐसा कुछ something ऐसा कुछ है. ठीक है. ठीक है. But for that, obviously, you need to know this. You need to also know your life as well, your challenges that you are facing. SDGs are international plus national level plus also state level. So in that sense, talking about this, and this will involve talking about this, and ultimately all this and plus you are part of this two history of life as well as history of humans. Hmm? And these two are related to the history of Earth, and then it goes to the Big Bang. This is how it is. Simple as that. Hmm? Uh, yep, simple as that. Okay, so you can sufficiently put a play card like this: universe, Earth, and you. It will be. You can also put one as well: universe, Earth, life, and you. It will be rather helpful pattern of seeing it. But already we have divided in the sixth thing. We know we have discussed time, but now we have taken time to the ultimate scale and universal scale and not the human scale. So you can, if possible, you can change it to universal time, or you can just change the name in the universe or universal. Universal is already a movie production or entertainment production house, as far as I know. A good production house, 21st century studio, universal and all. चलो भैया, keep moving. 13th. Now where will we head? We have seen that this is our journey path moving forward from here. We will keep it handy most likely. Okay, so 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 uh, what to talk about? Let's talk about life. Let's talk a little bit of biology and chemistry as well if possible. Hannah, how life has evolved. Life, there are already two goals: life on land, life below water. Correct. And behind that, we also have climate action. Correct. All these three are connected to
this element, life, or life. Life is below water, certainly it is. Life is on land as well. Terrestrial ecosystem and the aquatic ecosystem. Both of them are dependent upon the climate. So what you can see, very sufficiently see that climate models will be made better. Climate models that humans possess, which they obviously use mathematics, maths, and computers for that. You can use it. Also, data science plus artificial intelligence. They will use it, all these four, to make better climatic models and thus be able to predict and control. Hmm? So chances are, if we really manage to really move into 22nd century, if we survived up to that point, then most likely we have we will understand climate more. We will be able to control it more as well. We will know exactly what is really the problem with our whole. Why is it that we are not able to tackle the climate change thing? Why is it that is it warming despite we not war not we despite we not desiring it to become warm? है ना? Most likely what we will find is that actually we want it to become warm. We don't really care much enough. So in that process, we will find the variables where we need to really hit. Correct? Correct. But first of all, let's talk about the devastation that it can cause, which obviously involves, first of all, you need to know that this much diversity exists out there and how much it is interconnected and we are dependent. So that's the case. So life below water, let's talk about that. Now the life on land is quite good, so let's start with that, because that is first thing. है ना? When we study the history, we know that life was below water first, and then it came on the life on land, and then there is human history. So naturally, if we really want to influence this, we will have to first of all understand this lessons, the lessons of human history better as well. But we have talked a lot about it. So in that sense, I am moving to this step: first, second, and third. Correct? Correct. Life on land has mountainous terrain, it has got plains, it has got plateaus, it has got rivers. Rivers. Our rivers are a problem. Life on land also has atmosphere as well. Atmosphere has a problem. It has more CO2 now. Certainly it has. It is being emitted, and largely by the transport sector. So in that sense, EV becomes very crucial. Manufacturing of EV, deployment of EV, and in that process, obviously, we will need drivers trained and a whole process and things like that. And EV is taking place. EV is certainly taking place. At least one part of it, certainly. We are trying to do in that sense. Then EV is there, green hydrogen is there, and renewable energy is there. So things are coming and happening. Hmm? uh, Largely to deal with the atmosphere, but not to forget that life is also below water as well. So oceans also need to be tackled properly. Correct? But what's clear is that EVs are here. Hmm? On a larger scale, certainly. Renewable energy is here, green hydrogen is there on a larger scale, certainly. And EVs are used obviously for vehicles, and in that then there are two-wheelers, then there are four-wheelers, then there are trucks. And all of them, I'm not sure about the two-wheeler, but four-wheeler cars and trucks, these two are certainly being designed by the Tesla. So Tesla is going to be an important one to be seen. What they do, you can keep a follow up on that. In that, Elon Musk, what the Elon Musk is doing. Obviously, naturally, Elon Musk will die as well as Steve Jobs died too. ठीक है? सारी ठीक है जी. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. So what we saw here is that life on land
not lol. Life on land involves a lot of transportation now. Huh? Our movement has increased. We move too far. We have made trains, high speed trains in that. We have also made metro trains as well. We have built aeroplanes. We have built high speed, well, fast cars, or even fast bikes as well. For that, we built state highways, national highways, and things like that. We wanted to transport and both the things, goods and people both. We also built shipping as well. Correct. And all this cause a lot of emission. And in that sense, we also built the oil industry. Here, check, is Jason romantic relationship with another woman going to last forever? Nothing is gonna last forever, at least. Everyone is gonna die, but we shall see. Okay, wait a minute. Eight of Wands, Seven of Wands, Nine of Pentacles, and the Star. Last forever? I don't think so. So, okay, see. Eight of Wands, Seven of Wands, and the Nine of Pentacles. And the Star. No, they are not. Not like the forever thing. I'm telling you how. See. So Nine of Pentacles means that his focus is on his career in the first place. His own well-being is of supreme importance. Star means that he yet doesn't have uh, all the answers for life, and obviously that will involve love. Life only demands for you to answer two questions: how you will earn money and who you will love, or who your love is, essentially. Or what is your mission in life, and who do you love? Where do you apply your mind, and who for whom your heart beats for? Only two questions are really asked by life. So these questions everyone has to answer, be it girl or boy, or no matter rich or poor or anything like that. Ultimately, everyone have to answer these questions, or they can always remain confused. That's also a choice, which happens with many people as well. But the most happy ones are the ones who give the answers to these questions themselves, ultimately. Correct. So these two are there. Seven of Wands means that he kind of sense that she is not the one. And I guess Eight of Wands, I guess probably in the future course, what's going to happen is that first thing that is going to happen is that he will find that she is not the one, and in the process will make the relationship largely a long distance one. And in our times, using the phone largely, not meeting personally, not face to face. Correct. So in that process, I personally feel that this is gonna head towards separation. I'm not saying that he's gonna come towards you either. What I'm saying is that he's not gonna go with her, at least. It may be someone else, it may be you, that I can't say, but most likely it's not her. And unless until this star is gone, unless until the fool comes, and many good lessons, and unless until the hangman is eliminated, so it's time. It will take decent amount. All the readings that I have done, I can see that never ever I have found that his confusion is over.
And that's not easy to answer as well. It's easy to earn a little bit of money, but ultimately life asks very tough questions. The toughest questions are ultimately asked in our lives sooner or later, and so it's just a matter of time when the questions are asked. Nobody can really escape those questions. It's only a matter of time. You will be asked sooner or later. So that's the case. Hmm? Jason, Jason. चलो भैया. Like to, can you please check how does Jason truly feel about me? How does Jason truly feel about me? He's a Virgo, I'm a Cancer. Okay. Cancer individuals. I can feel your pain. At least understand it, if not feel it. Page of Swords. Virgo Cancer is, by the way, kind of okay combination. Neither too bad, not too good. Earth and water signs are usually good. Virgos are especially confused. So, can you please say how does Jason truly feel about me? Truly feel about you, I guess. Queen of Cups and the Six of Cups. I do feel again, as I have been saying it many a times, that he have a soft corner for you. So Six of Cups and the Queen of Cups, Page of Swords and the Knight of Wands. But the real trouble is that he is not sure about himself and about your love. He's not sure that he can really keep loving you just by having a one-sided love. So in that sense, just because he doesn't want to be in a relationship in which there is only one-sided love, he tries to run away whenever he starts feeling those emotions. He tries to run away from those emotions. If I can use that, probably rightly so as well. Nobody should enter into a connection which is not reciprocal. So that's the case. I think I've said it many times. And he does have emotions for you. He does feels emotionally connected, but he wants a different type of connection. A connection that is more equal. And if you both will give each other enough time and life a chance to teach you a few lessons, I think you both might end up together as well. Hmm. Six of Cups means he thinks of me, obviously, naturally, or what else it can mean. Six of Cups with the Queen of Cups. What else do you want emotionally in a reading? समा कहे परवाने से परतना जो Oh, no. ठीक. Okay, let's move. So कहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री लाइफ ऑन लैंड पर थे. Life on land, we were seeing that we have transportation needs. इन उस प्रोसेस में हमने व्हीकल मार्केट भी है और फ्यूल मार्केट भी है. ठीक है. इन और इसमें ऑयल का है और इसमें इंजन्स एंड एवरीथिंग इज ऑयल कंज्यूमिंग है. ठीक है. और इस प्रोसेस में फिर पीपल हैं जिनके पास जो इन दोनों पे खर्च करते हैं. ठीक है. सो ईवीज आर कमिंग है ना. दे विल प्रोवाइड अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल. कि तीन पार्ट्स में तो तीन चार पार्ट्स में तो है ही है. कार्स, देयर आर कार्स, देयर आर इट्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
in the sense of electric EMV इसको बोलता है, electric motor vehicles. Electric buses are there, and also electric what to say, taxi, if I may use that word, taxi, and then cars, and also trucks, etc. ठीक है, इसमें टेस्ला तो है ही है, there are more as well. So this is what we are doing. Hmm. And this we are doing largely to achieve sustainable development goals to reduce the climate change. Correct. As I was saying that after this we will have quality development goals. This is happening because already people are there. Population has increased a lot. है ना? And marriage and child and poverty etc. तो है ही है, उसमें quality education नहीं है, quality employment नहीं है. उस process में because we can't deal with these things in a very urgent manner, that's why we are, है ना, moving in this direction. Although it's good, but so is the case. तो जब हम लाइफ ऑन लैंड की बात करेंगे तो उसमें जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है, लाइफ ऑन लैंड में तो बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और रह रहे होते हैं, घर रहना और जाना कहीं पर, है ना, कि जाएंगे तो वहां भी कहीं रहेंगे, फिर वहां से रुकेंगे, फिर वापस आएंगे. सो रहना एंड जाना, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और उस बीच में फूड भी, और ट्रांसपोर्ट की एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एंड इफ पॉसिबल आल्सो लाइफ सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन एंड ऑल, सब कुछ आ जाता है. घर बहुतों का है, खरगोश का भी है, चूहे का भी है, शेर का भी है, टाइगर का भी. उसके लिए फिर हमने रिजर्व्स बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए. सो दैट्स हाउ वी हैव बीन डीलिंग विद द लाइफ ऑन द लैंड. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इनफ लैंड फॉर इनफ पीपल, बट उस प्रोसेस में क्या है कि एक्चुअली फैक्ट तो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है. और ह्यूमन पॉपुलेशन को हमें घटाना आते नहीं, क्योंकि देन पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स हमने कंडोम्स वगैरह लेके आए हैं, बट दैट्स आर दोज आर not really the solution ultimately. The thing is that as a human society, we have increased pleasure a lot. Fact is this. And that pleasure we derive from sex. That's the real crux of the situation. And this sense of pleasure comes or is increased when the sense of separation is increased. And this is increased because we need consumption culture. If separation is decreased, consumption culture will also decrease, and that is what we don't want. So on one hand we want to stoke consumption culture, and on the other hand we want to decrease the population. This is not compatible. This is certainly not compatible, and that is where I guess the trouble is, and that's where I guess ultimately we will talk about. So I will at least list it out, and then probably we will go and come back again. That life on land has a lot of transport and accommodation and food security, things like that. और ये तीनों ही जो हैं, ये humans, animals and plants, इन तीनों को ही चाहिए एक जगह, खाना, और if possible movement. इन दोनों को तो चाहिए ही, इनको भी एक decent amount में चाहिए होता है. They are then forest. ठीक है, इस प्रोसेस में लेकिन जब सबको बट नहीं पा रहा, हुआ ये है कि एनिमल और प्लांट्स की पॉपुलेशन घट गई है, ह्यूमन की बहुत बढ़ गई है, वो बिना सेक्स के बढ़ती नहीं है. एंड दैट एसेंशियली इज अ लार्जली रिजल्ट ऑफ प्लेजर. और प्लेजर जो है वो फिर कंजम्पशन से आता है, और कंजम्पशन के पहले पहले सेपरेशन होना चाहिए. और सेपरेशन जो है वो एक्चुअली में एक रियलिटी है नहीं. ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड. ठीक है, सो इट्स अ फॉल्स रियलिटी दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड. इस प्रोसेस में हमें फिर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट तो देखने को मिलेगी, क्योंकि वी विल वांट पीपल टू मोर कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. So that is a trend that ultimately will have to reverse, and that is what has to be done. Whether it be SDG in the first place or the QDG ultimately. Correct? So that's it. I think थोड़ा समय बाद मिलते हैं फिर हम लोग. ठीक है जी, चलिए.